Hello everyone, today we will learn some idioms and phrases. So please watch till the end, and if you like this video, so please like, share and subscribe my channel. So yes, without wasting time, we will start our learning journey. So first idiom is here, a hot potato. A hot potato. So yes, a hot potato, it means a controversial issue. A controversial issue. So a hot potato का हिंदी मतलब यह होता है कि कठिन परिस्थिति। अगर कोई बात हमें बोलनी है तो वो बात बोलने के लिए हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है, या फिर वो बात अगर हम रखेंगे तो उसके साइड से कुछ लोग होते हैं और उसके अपोजिट भी कुछ लोग होते हैं। तो किसी को वो बात अच्छी लगती है और किसी को वो बात अच्छी नहीं लगती है। बेसिकली ये हॉट पोटैटो, ये इडियम हम यूज़ करते हैं किसी की पर्सनल लाइफ, किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ बोलने की इच्छा नहीं होती है, या कोई भी किसी के भी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं कर सकता, इज़न्ट इट? या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो उसके ऊपर भी हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अगर कोई वो ज़्यादा विवादास्पद मुद्दा होता है तो हम उसके ऊपर अपनी राय, अपनी बात मोस्टली नहीं रखते। तो उसी के लिए हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं हॉट पोटैटो. So yes, now we will make some sentences about this idiom, a hot potato. Yes, first sentence is here. Nearly 2 decades after they were introduced, university tuition fees are a hot potato. I repeat this example. Nearly 2 decades after they were introduced, university tuition fees are a hot potato. Second example is here. His legal team would drop him like a hot potato. I repeat, his legal team would drop him like a hot potato. So yes, now we will turn our next idiom. So yes, next idiom is here. Bite your tongue. Bite your tongue. सो इसका इंग्लिश में मतलब यह होता है टू कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट। और हिंदी में इसका अर्थ ऐसे होता है, अपने कहे हुए किसी बात के ऊपर बाद में हमें दुख प्रकट होता है या अच्छा नहीं लगता, हमें ऐसे लगता है कि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी और मैंने ये बात क्यों कही, ऐसे जब फीलिंग होती है तब हम ये इडियम्स यूज़ करते हैं. बाइट योर टंग, बाइट योर टंग. सो नाउ वी विल मेक सम sentences about this idiom, bite your tongue. First example is here. No one is getting married. Bite your tongue. No one is getting married. Bite your tongue. Second example is here. Bite your tongue. He doesn't want to hear your opinion. Bite your tongue. He doesn't want to hear your opinion about everything. About everything. So yes, now we will turn our next idiom. So next idiom is here. House of cards. House of cards. House of cards means unstable situation. Unstable situation. House of cards means unstable situation. So इसका हिंदी अर्थ ये होता है असुरक्षित योजना. असुरक्षित योजना, इसका मतलब ये होता है ना कि कोई अगर हम काम करते हैं तो वो कितना सक्सेस होगा, वो कितने दिन तक ठीक से रहेगा, है ना. तो उसके लिए हमें कोई हम अपनी राय नहीं दे सकते, है ना. तो उसके लिए हम बोलते हैं
हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स. सो यस, उसका एग्जाम्पल ये है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, योर लाइफ इज बिल्ट ऑन अ फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड्स. योर लाइफ इज बिल्ट ऑन अ फाइनेंशियल हाउस ऑफ कार्ड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, his proposal was nothing. His proposal was nothing but a house of cards. His proposal was nothing but a house of cards. So yes friends, today we learned some idioms and phrases with their meanings, with their examples. Please make some sentences about these idioms in the comment box, and please like, share and subscribe my channel. Yes, bye.